Welcome to maths class, and today we'll do multiplication and division. So in this chapter we are going to learn about the multiplication and division. In many daily lives activities we need multiplication. Suppose we buy 15 copies, each rupees 24, 12 pencils for each rupees 4, 6 eraser each at rupees 5, 2 sharpeners at rupees 10 and 2 pencil boxes each at rupees 85 from the stationery shop. Instead of adding all items individually, he'll make a bill like this. So whenever we'll go to shop and buy something, like if we go to stationery shop and we'll buy pencil, eraser, sharpener, all these things. So what will shopkeeper do? He'll make a bill like this. Here you can see. This is a bill. In this bill, items are mentioned. Whatever item you have bought, like copies, pencil, eraser, sharpener, pencil boxes, and their cost is given here. This is cost for each item, means for one item, and the quantity is given here. So the total cost will be the number of item you have purchased and cost of each item multiplied. So here the cost of copies, because 15 copies and each copy costs 24 rupees. So total cost 24 into 15, 360 rupees. Like this, we'll find out the total cost, and this is the total, rupees 628. So if we add individually, it will take too much time. So rather than doing addition, we'll do multiplication. Next is multiplication. Multiplication is the repeated addition of the number. As we all know, what is multiplication? Multiplication is the repeated addition of the same number. When the same number is added many times, then it takes more time, such as 12 plus 12 plus 12 plus 12. So if we keep adding, it will take so much time. That is equals to 72. Instead of that, what we'll do? We'll multiply 12 by 6. So that is equals to 72. Clear? Next is properties or facts of multiplication. So first we'll take first property. That is the order property of multiplication. According to this property, the product of two numbers does not change even when the order is changed. Means we can multiply two or more number in any order. The product will remain same. For example, we'll consider two numbers, 45 and 30. So 45 multiplied by 30, that is equals to 1350. Now if you multiply 30 by 45, again the product is same, 1350. So according to this property, we can multiply two or more number in any order, the product will remain same. In both cases, the result is same. So this property is also called the commutative property. We also call this property as commutative property. Property 2. Grouping property of multiplication. According to this property, the product of three numbers does not change even we change their grouping. For example, consider three numbers, 25, 16 and 10. So first we'll find out product of 16 and 10, and the product will multiply by 25. Clear? So that is equals to 4000. Now if we change the grouping, first we multiply 25 and 16 and the product is multiplied by 10. Again the product is same, 4000. So if we change the grouping, the product will not change. In both the cases, the product will remain same. Clear? Next is property 3. Multiplication property of 1. According to this property, the product of a number and 1 is the number itself. That means if you multiply any number with 1, the product will be number itself. Like 723 multiplied by 1 gives you 723. Clear? Property 4. Multiplicative property of 0. The product of a number and 0 is always 0. If you multiply any number with 0, the product will be 0. Like 739 multiplied by 0 gives you 0. Clear? 1 is called the multiplicative identity of the number. Next is evolution time 3.1. First question. Using property, fill in the blanks. So we have to use the property and fill in the blanks. 3726 multiplied by 512 is same as 512 multiplied by 3726. That is the commutative property of multiplication. So you have to practice all the questions of this exercise. Next is multiplication of a number by 10, 100, 1000 and their multiples. Read and observe the following pattern. 35 multiplied by 10 gives you 350. 412 multiplied by 100 gives you 41,200.
316 multiplied by thousands gives you 3,16,000. So what we are doing here, if you multiply by 10, 35 multiplied by 1, the product of 35 and 1, that is 35, and we'll put 1 0 at the end of product on the right hand side. Clear? Same, if you multiply by 100, we'll put 2 0 at the end of product. Same, if you multiply by 1000, so we'll put 3 zeros. Clear? So as you have observed that we multiply a number by 10, 100, 1000, we put the same number of zeros as in 10, like 10 में 1 0 है, 100 there are 2 zeros, 1000 there are 3 zeros. So according to that we will put the zeros after multiply the number by 1. So first you multiply the number by 1 and put as many zeros as there are in multiply. Clear? Next is multiplication by the multiples of 10, 100 and thousands. 62 multiplied by 20, that is equals to 20 is what? 2 into 10. So 62 and multiply by 2. First we will find the product of 62 and 2 and we will multiply by 10. So 62 into 2, that is 124. If we multiply by 10, what will do? इसका product क्या हो जाएगा? 124 and 1 0 लगा देंगे because there is 1 0 in 10. Same, 372 multiplied by 400. So 372 and 4 का product find out करेंगे and we'll put 2 zeros. Clear? So as you have observed, the first we split up multiples of 10, 100, 1000 and then multiply the multiple number and then put as many zeros in the product as in multiplier has. But now we'll take an example here. Multiply the following by making suitable grouping. So we have to multiply 125 multiply by 81 multiply by 8. So first we have to do the grouping. इस तरीके से grouping करेंगे जिससे हम easily multiply कर सके. Clear? So we will try कि जो product है हमारा किसी भी 2 number को हम multiply करके जो product आए इस तरीके से आए कि उसपे zeros हो 10 के multiples में हो. Like 125 multiply by 8, that gives you 1000. So now you can easily multiply with 81. 81 into 1000, that is 81,000. Clear? So इस तरीके से आपको grouping करनी है. Next is evolution time 3.2. Multiply the following. 638 multiplied by 10, that is equals to 6,380. Clear? Next, multiply the following. 428 multiplied by 40. So 428 multiplied by 4 into 10. So first हम इन दोनों को multiply करेंगे. So what we'll do? First we'll find the product of 428 and 4 and 1 0 लगा देंगे. Clear? Next, multiply the following by making suitable grouping. So यहाँ पे हमें grouping करनी है. 26 multiplied by 50 into 4. 50 into 4, that is equals to 200. So 26 into 200. अब इसका product find out कर लेंगे. 26 को 2 से multiply करेंगे and 2 zeros. Clear? So practice all the questions given in the exercise. Next is multiplication of a number by a 2-digit number. अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम 2-digit numbers को multiply करते हैं. So here we have to multiply 84 multiplied by 23. So 84 और 23 को इस तरीके से हम कॉलम में अरेंज कर लेंगे. फर्स्ट मल्टीप्लाई में जो वंस की प्लेस की डिजिट है उसको हम दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3 12, 2 1 कैरी ओवर, 8 3 24 and 1 25. नाउ विल पुट 1 0 हेयर बिकॉज नेक्स्ट नंबर क्या है, टेंस की प्लेस पे है तो हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे. नाउ 2 4 8, 8 2 16. ऐड कर देंगे 2 + 0 2, 8 + 5 13, 1 कैरी ओवर, 6 and 3 9 and 1, 1932. Clear? Next, evolution time 3.3. Multiply the following. 68 multiplied by 47. So 68 को multiply करना हमें 47 से. 56 5 carry over, 42 and 5 47. Put 1 0 here. Now we'll multiply 4 by 8, 3 carry over. Now we'll add them together 6,
3196. Clear? Next, multiply the following. So same way, इसी तरीके से हमें करना है, like इस तरीके से हम लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई करना है 28 से. सबसे पहले हम 8 को इन सारी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड नेक्स्ट रो में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उनका ऐड करके जो है प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय अ 3 डिजिट नंबर. नाउ वी लर्न how to multiply by 3 digit number. It is same as we are multiplying 1 digit number or 2 digit number. उसी तरीके से करेंगे. Here we have to multiply 378 by 256. So इस तरीके से कॉलम में लिख देंगे. First, always start from the right hand side. Multiply 6 with 8, then 7 and then 3. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को 378 से मल्टीप्लाई करेंगे and find their product. That is 2268. Now we'll put 1 0 here and हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट 8 से, then 7 से एंड then 3 से एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे. क्लियर? देन हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 8 से, फिर 7 से, फिर 3 से. नाउ विल ऐड देम टुगेदर. सो ये हो जाएगा 8 6 9 प्लस 6 15 एंड 2 17. 1 कैरी ओवर. 5 प्लस 2 7 8 8 8 16. 1 कैरी ओवर. 7 प्लस 8 एंड 1 9. सो प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 96,768. क्लियर? सो जिस तरीके से हम 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, सेम वे वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर. क्लियर? नेक्स्ट इज इवोल्यूशन टाइम 3.4. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. 426 मल्टीप्लाई बाय 316. सो 426 को हमें मल्टीप्लाई करना है 316 से. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. 6 6 36. 3 कैरी ओवर. 6 2 12 एंड 3 15. 1 कैरी ओवर. 24 एंड 1 25. नाउ विल पुट 1 0. नाउ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले 6 से, देन 2 एंड देन 4. देन विल पुट 2 zeros बिकॉज 3 हमारा कहाँ पे है, 100 की पोजिशन पे है. 3 6 18. 1 कैरी ओवर. 3 2 6 and 1 7. 4 3 12. Now we'll add them together. 6 1 carry over. 10 5 15 and 1 16. 1 carry over. So ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. सेम वे इसी तरीके से हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे हमारा एक नंबर जो है दैट इज़ 4 डिजिट नंबर एंड नेक्स्ट इज 3 डिजिट नंबर. तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना, सेम प्रोसेस फॉलो होगा एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज स्टोरी प्रॉब्लम. Here we'll take an example. The cost of a chair, one chair, that is rupees 325. Find the cost of 126 such chair. So 1 की cost given है, अगर हमें ज़्यादा की find out करनी है, that means we will multiply. So cost of one chair that is rupees 325 and we have to find for 126 such chair. तो 325 को 126 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी 40,950 रुपीज़. क्लियर? नेक्स्ट इज इवोल्यूशन टाइम 3.5. The cost of a calculator is rupees 528. Find the cost of 35 such calculator. So, one calculator की cost given है 35 की, find out करनी है तो 35 से multiply कर लेंगे. So, one calculator की है 528, इसको हम 35 से multiply कर देंगे. 4 carry over. 0. 5 3s are 15. 0 4 4 8. 18,480 rupees. That is the cost of 35 such calculator. Clear? So practice all the questions. Next is division. So we have done multiplication. Now we'll do division. Start with introduction. Division is the inverse of multiplication. Division क्या होता है? Multiplication का inverse यानी उल्टा. As we know that the multiplication is the repeated addition of same numbers. Similarly, division is what? Division is the repeated subtraction of the number from another number. Such as we have to divide 28 into 7 equal part. So 28 minus 7 gives you 21. Again we will subtract 7 from it, we'll get 14. So we keep subtracting 7 until we'll get 0. So 7 minus 7 0.
So it means 7 is subtracted 4 times. How many times we have done subtraction? 4 times. That means 28 divided by 7, that is equals to 4. So instead of subtracting a number from the given number many times, we simply divide. So अगर हम subtract करते रहेंगे, it will become very lengthy. So it's easy कि हम divide कर लें और answer find out कर लें. Now, suppose a girl had 32 chocolates and she want to divide them into her 16 friends. Total उसके पास 32 chocolates है and she want to divide among her 16 friends. How many chocolate does each get? So 32 divided by 16. 16 से divide करेंगे will get 2. So each friend will get 2 chocolates. Clear? Think of it. A number to be divided, जिस number को हम divide करते हैं, that is called dividend. A number by which we divide, जिस number से हम divide करते हैं, उसको कहते हैं divisor. And the number that we get after the division, that is called quotient. And जो left over number होता है वो हमारा क्या कहलाता है? Remainder. Clear? Now we'll take an example here. 816 divided by 7. So हमें 816 को 7 से divide करना है. In division we always start with the leftmost digit. यहाँ पे क्या है? 8 और हमारा जो divisor है that is 7. 7 से ज़्यादा है. So we have to find a number in 7 table which is either equal to 8 or just less than 8. So 7 की table में क्या होगा? 7 1s are 7 because 7 2s are 14 which is more than 8. So 1 time करेंगे, 7 लिखेंगे, subtract करेंगे, we'll get 1. Now we'll note down the next number, that is 1. So it became 11. Clear? Now 7 1s are 7. Subtract करेंगे, we'll get 4. Next number note down करेंगे, so become 46. Now 7 से हम divide करेंगे, 7 6 are 42. Subtract करेंगे, we'll get 4. So here 7 is what? Our divisor, 816 is dividend, 116 is quotient and 4 is our remainder. Dividend is always equal to divisor multiply quotient, means divisor और quotient के product को में अगर हम remainder को add करें that is equals to dividend. Now we'll take the properties of division. First property, property of 0. When 0 is divided by a non-zero number, the quotient is 0. 0 को किसी भी non-zero number से divide करेंगे, quotient क्या होगा? 0. 0 divided by 372 gives you 0. Property 2. Property of 1. When a number is divided by 1, the quotient is the number itself. किसी भी number को अगर 1 से divide करेंगे, quotient क्या होगा? Number itself. Like 379 divided by 1 gives you 379, number itself. Property 3. Division of a number by itself. किसी भी number को उसी number से divide करेंगे. When a non-zero number is divided by itself, the quotient is always 1. 239 divided by 239 gives you 1. Clear? Next is evolution time 3.6. Using the property fill in the blanks. 8164 divided by 1 gives you 8164. Clear? Practice all the questions. Next is division of a number by 10, 100 and 1000. So look at this table. If we divide any number by 10, start from the right hand side. First digit, that means the ones place digit, because there is 1 0 in 10. The ones place digit, that is our remainder, and remaining digit 344, that is our quotient. If we divide by 100 like here, so the digit at ones and tens place, that is our remainder 62, and remaining digit हमारा क्या हो जाएगा? Quotient. Clear? That is 139. Similarly, if we divide by 1000, the digit at ones, tens and 100 place, that is our remainder, and remaining digit हमारा quotient हो जाएगा. Clear? So we can conclude from the above table that when a number is divided by 10, 100, 1000, etc., we obtain the quotient by removing as many digits from the dividend from the right to left. As many zeros are there in the divisor and the leftover digits are remainder. Clear? Next is evolution time 3.7. Find the quotient and remainder. 81,642 divided by 10, there is 1 0, so the digit at ones place, that is our remainder, that means 2, and quotient remaining digit, that is 8164. ये हमारा हो जाएगा quotient. Clear? So you have to practice all the questions of given exercise. Next is division of one digit number. So here we have to divide 7,28,963 by 5.
क्लियर? ऑलवेज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, डिवीजन में हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं. हियर द डिजिट इज 7 विच इज मोर देन आर डिवाइजर. डिवाइजर हमारा क्या 5 से. सो 5 1 से 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, नेक्स्ट डिजिट नोट डाउन करेंगे 22, 5 4 से 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे गेट 2, सो दिस इज 28, 5 5 से 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, नेक्स्ट डिजिट नोट डाउन करेंगे 39, 5 7 से 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, नेक्स्ट डिजिट नोट डाउन करेंगे 46, 5 9 से 45. क्लियर? सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, नेक्स्ट डिजिट नोट डाउन करेंगे 13, 5 2 से 10. सो हियर 3 इज आर रिमाइंडर एंड दिस इज 1,45,792. दिस इज आर क्वोशिएंट. क्लियर? रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर. जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से कम होगा. यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 3 विच इज लेस देन द डिवाइजर विच इज 5. नेक्स्ट इज डिवीजन बाय अ 2 और 3 डिजिट नंबर. सेम वे, उसी तरीके से प्रोसेस वही रहेगा अगर हम 2 डिजिट नंबर से करें या 3 डिजिट नंबर से. हियर वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल. हियर वी हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर बाय 37 एंड वी हैव टू चेक वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट. सो इस तरीके से हम नंबर को लिखेंगे. नाउ 37 इज 2 डिजिट नंबर, तो हम ये 2 डिजिट लेंगे. 41, 37 1 ज़ा 37, सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट 4, नेक्स्ट डिजिट नोट डाउन करेंगे 46, अगेन 1 टाइम होगा 37, सब्ट्रैक्ट किया विल गेट 9. नाउ नेक्स्ट डिजिट नोट डाउन करेंगे 93. सो ऑलवेज जो भी हमारा डिवाइजर है उसकी टेबल हमें बोलनी है, उसमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो गिवन नंबर के या तो बिल्कुल इक्वल हो या उससे जस्ट छोटा हो. क्लियर? सो 93 माइनस 74 दैट इज इक्वल्स टू 19. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 192. क्लियर? 5 टाइम हो जाएगा 185, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, नेक्स्ट डिजिट नोट डाउन करेंगे 78, 37 2 ज़ा 74 and 4. Now here 4 is our remainder and this is our quotient. So now we'll check our answer. Dividend equals to divisor multiplied by quotient plus remainder. This is our dividend. Divisor हमारा 37 multiplied by 11,252 which is our quotient plus remainder 4. So that is equals to dividend. That means our answer is correct and answer is verified. Next is evolution time 3.8. Divide the following and find the quotient and remainder. So we have to divide it by 8. So first digit is 5 which is less than 8. So हम क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट को लेंगे. 8 6 ज़ा 48, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4. Now next number 48 0. Next number note down करेंगे 3. Now 3 is less than 8, so we'll put 0 in the quotient and next number note down करेंगे 8 4 ज़ा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4. So हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा 6604 and 4 is our remainder. Clear? Next is divide the following and find the quotient and remainder. So यहाँ पे हमें गिवन नंबर को 29 से डिवाइड करना है. प्रोसेस वही रहेगा, उसी तरीके से डिवाइड करेंगे. क्लियर? एंड देन वी हैव टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है दैट इज़ अ 3 डिजिट नंबर 123. प्रोसेस वही रहेगा, उसी तरीके से हमें मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके जो है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. क्लियर? नेक्स्ट, डिवाइड एंड चेक योर आंसर. हियर वी हैव टू डिवाइड एंड वी हैव टू चेक वेदर आंसर इज करेक्ट और नॉट. सो यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो क्या है, गिवन नंबर जो हमारा है दैट इज, नाउ विल डिवाइड बाय 8. Clear? First digit is 5 which is less than 8, so we'll take these 2 digits. Now we'll subtract, so that is equals to 3. Now next is
32, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 8 5s are 40, get 3, 32, 1 and 10, 8 1s are 8, 2. So now we have to check our answer according to that. Dividend, that is equals to divisor multiplied by quotient plus remainder. So divisor is 8 multiplied by quotient, that is plus remainder is 2. So that is equals to plus 2, that is और ये हमारा क्या था, dividend. That means our answer is verified. Clear? So practice all the questions of given exercise. Next is story problems. Example लेते हैं, the cost of 96 geometry boxes is rupees 17,952. Find the cost of one geometry box. अगर हमें ज़्यादा की given है, we have to find the one. For one, that means we will divide. So 17,952 को हम 96 से divide कर देंगे. So quotient हमारा आ गया 187. So cost of one geometry box क्या हो जाएगी, 187 rupees. Clear? Next is evolution time 3.9. The cost of 25 tables is 12,350 rupees. Find the cost of one table. So हम क्या करेंगे, 12,350 को 25 से divide कर देंगे. Clear? Now हम ये तीनों नंबर लेंगे. Clear? 100, 25 was 103. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे, 225, 100. दैट मीन्स कॉस्ट क्या हो जाएगी for one, that is 494 rupees. Cost of one table, that is 494 rupees. So you have to practice all the questions given here. Next is simplification of expression involving addition, subtraction, multiplication and division. अगर किसी पे हमें एडिशन भी दे रखा है, सब्ट्रैक्शन भी दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन भी दे रखा है, डिविजन भी दे रखा है, तो हाउ विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो उसका एक वे है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं. व्हाट इज दैट? सो देयर इज अ सर्टेन रूल टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. रूल क्या है हमारा? रूल यहाँ पे डी मास, डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन. दैट मीन्स सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो जब भी हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस रूल का ध्यान रखना है, डी मास का. क्लियर? थिंक ऑफ इट. आपने बॉड मास के बारे में सुना होगा. बॉड मास रूल क्या होता है? दैट इज द सॉल्विंग ब्रैकेट. बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, देन डी मीन्स डिवीजन, एन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन. सो इसको हम फॉलो करेंगे जब भी हमें बॉड मास का ये सारी चीज़ें दी हुई है तो बॉड मास को हमें फॉलो करना है. क्लियर? सो यू विल स्टडी अबाउट दिस इन हायर क्लासेस. आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम डी मास के बारे में पढ़ रहे हैं. क्लियर? सो बॉड मास के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हम डी मास के बारे में पढ़ेंगे. सो नाउ विल टेक एन एग्जांपल हेयर. वी हैव टू सिंप्लीफाई 30 + 40 डिवाइडेड बाय 5 - 6. सो हमारा रूल क्या है डी मास का? सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. सो 30 + 40. क्लियर? देन 40 डिवाइड बाय 5 - 6 है, तो हम क्या करेंगे? 40 को सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लेंगे. सो दैट इज इक्वल्स टू 8. सो 30 + 8 - 6 आ जाएगा. देन मल्टीप्लाई. हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐड. सो 30 + 8 38. उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट 32. क्लियर? सो हमें इस रूल को फॉलो करना है, सॉल्व करना है. क्लियर? नेक्स्ट इज इवोल्यूशन टाइम 3.10. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. 16 × 5 - 70 डिवाइड बाय 40. क्लियर? सो डी मास का फॉलो होगा 16 × 5 - 70 डिवाइड बाय 40. सबसे पहले हम 70 को 14 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है? डिवाइड. सो 16 × 5 - 70 डिवाइड बाय 14 गिव्स यू 5. नाउ मल्टीप्लाई. 16 × 5,
that is 65 minus 5 that is equals to 60. Clear? So step by step हमें इस तरीके से फॉलो करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. So you'll practice all the questions of this exercise. Next is look back. Here we are summarizing the chapter order property of multiplication. The product of two numbers does not change even we change the order of the number. Grouping property of the multiplication. The product of three numbers does not change even we change their grouping. Multiplication property of 1. The product of the number and 1 is the number itself. Multiplication property of 0. The product of a number and 0 is always 0. Property of 0. When 0 is divided by a non-zero number, the quotient is 0. Division of a number by itself. When a non-zero number is divided by itself, the quotient is 1. Let's recall. So all these questions are based on the concept we have done in the chapter. So ये सारे question आपको खुद से practice करने हैं. Next is mental zone. Here we have to multiply the given number by 100. So the number and 1. इसका product क्या हो जाएगा? 56,432 and we'll put 20 at the end of product. Clear? Next is multiple choice questions. Take the correct option. The number to be multiplied is called the multiplicand. So A is the correct option here. So here we end the chapter. I hope you understand the chapter well. Now you to practice it.